Okay, so today we are going to talk about why the in-depth fundamental analysis, like going into the in-depth fundamental analysis, is just a piece of bullshit. First of all, we have to clear. First of all, I let me clear that I'm not talking that fundamentals are just bullshit. I am talking. I want to elaborate that going into in depth of the fundamental analysis is just bullshit. Let's say the company, a Tesla. Okay, so first of all, we have to understand that in this world, in 2024, in this era, in this generation, no one want to give you their money very free. They don't want to give their money to you. You are just a beginner and just go into the market and see some kind of news and going into the market and just see the positive side of the business or on the stocks or on the shares and just buy that particular stocks and just buy that 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 stock. Okay, it's not possible in this era that someone give you their money free unless you give a piece of value to them. Okay, so the scenario is that we know it's a very like common sense that no one is going to give you money free. Okay, if everyone is getting money free, then everyone is rich, then there is no value of a rich person, of a rich man. So everything needs a demand, everything demands a value. If you give a value to someone or something, then it or him will give you a reward. Okay, and the reward will in the form of a cash or something that you want. Okay, but you have to give a value to them, but most probably you will get a money in the exchange of value. Okay, so no one is going to give you a money free. So in my point of view, why the stocks, why the company have to share their value and just they will give you a money free. It's not a common sense, it's not a logical thing, it's not a humanic, it's not like it's not possible, man. It's not possible that someone is going to give you that someone is going to give you the information and just you see that information and just you go and buy that particular stocks or shares. It's not possible. Okay, so first of all we have to understand that this is not possible in this generation, in this era. So going in depth of the fundamental analysis is just a bullshit. Okay, so what we have to focus on. So I know that fundamental is very crucial, is very important, but we are just a retailers, we are just a human, we are just a people, we are just a simplistic people, we are just a average people. We don't have enough money that we're gonna buy their subscription, that we're gonna buy the subscription to get the very important information from them, from the company, from the Tesla, like. Okay, so what we gonna do? So in this video I gonna tell you that that without the fundamental analysis you will get that information. That if the interest rate is going to change, let's say the interest is going to change, then I gonna tell you now that this technique will gonna help you. Okay, to identify where the market will gonna go.
in the future. Now, first of all, let me clear out that interest rate interest rate run the market. Okay. Now I am talking about the foreign currency. Now you can compare the other assets with them. Okay, but now in this video I am going to talk about the foreign exchange currencies. Okay, now we have to know that the interest rate, let me give me a second, that interest rate flow is the flow of the currency, the flow of the foreign exchange currency market is depend entirely on the interest rate. Okay, so why? Because if the interest rate is higher, then the economy will be decreased. How? If the interest rate is high, then there is a less flow of cash in the country. Okay, if the interest rate is high, then the flow of the cash in the country is less. If the cash of the sorry, if the flow of cash is low in the country, then there is no any kind of innovations, and there is no any kind of like development in the businesses, because there's no any kind of cash. People don't have cash, then how they gonna do any kind of business? Okay, so if people don't have cash, then there's less economy development in this country. Okay, so now if the interest rate is low, then people will get more loan from the bank, from the central bank, or sorry, not central bank, from the local banks, and that's it. People will get more cash. Okay, people will get more cash, and now people can do more businesses. Okay, but if we talk about the disadvantage of the more flow, then if people have more flow of cash, then the supply will be increase of like something that is demandable. Okay, that the something that is in demand in the market. Then if the supply is low and the demand is high, then the price of the particular thing is will be go also high. Okay, wait a second, let me clear out the, wait a second. Okay, now if the demand of the particular thing is also very very volatile, like very demand, like if the demand of the particular thing is very high, then the supply of that particular thing need also some kind of uh, wait a second. Okay, so the like so the making of the particular thing will also have to go more and more. Okay, so that's how the inflation will also increase, because people have more cash, and we have to know that if people have more cash, then now we have to know that if the demand of the particular thing is high, then the price will also go high. Okay, because the demand is too high and the supply is too low, then the price will gonna go high, because there's a low supply. Okay, now so the macro point of view, I will tell you that the interest rate, if the interest rate is high, then the flow of cash is low. Okay, after all, the interest rate is the only key factor that drives the currency market, that heavily
drives the currency market. Okay, so now if we talk about the bond market, okay, if the bond, like first of all we have to understand what is the meaning of bond. Okay, bond drives to the loan. Okay, if people don't have a cash at that time, then they will get a bond, they will give a bond to the person. Okay, like if a person A don't have cash at that time, they will give a bond to that person because of the high interest rate in the country. Okay, so people don't have cash, that's how they are exchanging bonds. So in that way the debt of the country is also increasing. Okay, okay, now if the cash is low, if the flow of cash is low, if the bond, if the debt of the market is increasing, then the businesses will also decrease. The new innovations, the new uh, uh, like the new processings of the of the products will also decrease because of the less cash. People need cash in the market. Okay, now if we understood that thing, then we understand the concept of debt, then we understand the concept of bonds. Okay, now if the bonds, if the bond market is high, let me show you the bond market. This is the bond. Okay, this is the bond market. Now I'm going to show you the three kind of bond markets: the 30-year bond markets, the 10-year bond market, and the 5 years of bond market. Okay, so now if we understand the concept that bond market leads to the less economy, we will gonna understand the macroeconomic point of view. Okay, so now I want to show you something that is very crucial for you, because at the end I tell you that the fundamental analysis is just a bullshit. Okay, now some motherfucker will say that he's just talking bullshit, and bro, you are bullshit. Okay, you are just dumbass. Okay, who are just wrecked his mind toward the their sheets, and that's it. Now if you talk about the macro point of view, if you talk about my point of view, let's talk about that. Okay, now this is the month of October to 2023, and this is the Nasdaq. So this is a monthly chart. Okay, and this is a weekly chart. This is a monthly chart of Nasdaq, and okay, and this is a month of let me show you, wait a second. So now uh, हम किस पे बात कर रहे थे? Now I'm going to talk about in Hindi. Okay, so अब ये सोचने वाली बात है कि नैस्डैक, ठीक है, मंथली का चार्ट है हमारे पास, ये ठीक हो गया, ये हमारे पास मंथली का चार्ट है। मार्केट ने सिर्फ एफएच पे कुछ भी नहीं किया, मार्केट सिर्फ सिर्फ एक टिप टैप किया। ओके, नाउ वी आर नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग to go enough in depth of this monthly chart, because I want to tell you about the weekly chart. Okay, सी, ये है हमारे पास मार्च। ओके, ये हमारे पास मई, मार्च, ये मई का सिनेरियो है। ओके, यप, हाँ, तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मई, एंड दिस इज आ अक्टूबर। ओके, ये हमारे पास अक्टूबर का सिनेरियो है। ओके, नाउ ये तो बात हमें क्लियर होगी कि ये हमारे पास अक्टूबर है और ये हमारे पास क्या है, मार्च। नाउ सी दिस वन, this is monthly. Now I want to talk about this. This is May,
एंड दिस इज अक्टूबर, ओके। दोनों में लिक्विडिटी ग्रैब की मार्केट ने, किसी ने कुछ भी नहीं किया, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं की, ठीक हो गया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डो जोन्स, सो अब यहाँ पर अक्टूबर ने मई की लिक्विड ग्रैब की, बट स्टिल मार्च अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि मार्च ने पहले ही एक लंबी विकेट लगा के कोई ना कोई लिक्विड ग्रैब कर ली होगी लाइक दिस। सो अब यहाँ पर हमारे पास एक अक्टूबर ने यहाँ पर क्या सिनेरियो किया, यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड ग्रैब की और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन आ गई बुलिश जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इफ यू आर अ आईसीटी प्लेयर, okay, ICT concept player, then you know better what I'm talking about, okay? So this is the month of October, this is the month of March, oh sorry May, okay। मार्केट ने लिक्विड ग्रैब की, मार्केट ने लिक्विड ग्रैब करने के बाद यहाँ पर ना मार्केट ने यहाँ पर की, ठीक है, ना मार्केट ने ईएस में की, ना मार्केट ने एनक्यू में की, ठीक है, ना मार्केट ने मंथली की एनक्यू में की। मार्केट ने कितना बड़ा यहाँ पर, सॉरी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट ने कितना बड़ा फासला किया, मार्केट ने लिक्विड ग्रैब ही नहीं की, ठीक है। और यहाँ पर ईएस में क्या किया मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, मार्केट ने सिर्फ पेंडिंग लिक्विडिटी, मार्केट ने सिर्फ रिएक्शन ब्लॉक पर टैप करके बैम बुल साइड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वाईएम, देन डो जोन्स में मार्केट ने किसी एक पॉइंट की एक मंथ यानी कि मई की लिक्विड ग्रैब की, और लिक्विड ग्रैब करने के बाद बैम बुल साइड, ओके। नाउ हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर अब मार्केट बुलिश जाएगी। नाउ इफ आई वांट टू नो मोर क्लैरिफिकेशंस अबाउट द करेंसी मार्केट्स, इफ आई लाइक, हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विड ग्रैब कर ली है, अब यहाँ पर मार्केट अब बुल साइड जाएगी, ठीक हो गया, हमें ये तो पता चल गया। बट if I want to know a more high probability, if I want to know more consequences, if I want to know more contexts, then the DXY is move against the this futures or indexes what we said। so यहाँ पर मार्केट ने एक लिक्विडी मार्केट ने ग्रैब की, आईआरएल पे मार्केट ने टैप किया, दिस इज द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब यहाँ पर अब हम किस तरह ये एक्सपेक्ट करें कि ये हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी है, ठीक हो गया। हम ये किस तरह एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर जो लिक्विडी है, जो मार्केट ने लिक्विड आईआरएल की लिक्विड ग्रैब की है, अब हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर मार्केट बाय सेल जाएगी। यहाँ पर मार्केट ने, अब कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई ये क्या कहते हैं, मार्केट अब इसके लिक्विड ग्रैब करेगी, मार्केट ये लिक्विड ग्रैब करेगी, मार्केट पूरा एफईजी पर टैप करेगी, मार्केट कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे टैप करके देन सेल सेट जाएगी। तो वो यहाँ पर तो उनकी एनालिसिस गलत हुई, और यहाँ मार्केट ने सिर्फ एक 0.25 लेवल पे टैप करके ऑफ द एफईजी मार्केट ने सेल सेट का मूवमेंट दिया। अच्छा, तो अब हम किस तरह ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से नहीं, मार्केट यहीं से मूव होगी, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से मार्केट 50% से भी नहीं मूव होगी, मार्केट 75% लेवल से भी मूव नहीं होगी, मार्केट सिर्फ 0.25 लेवल एफईजी के 0.25 लेवल तक पे टैप करके यहाँ से मूव होगी। नाउ हाउ वी कैन नो दिस? नाउ as I tell you that the bond market move against the cash, okay, the bond market move against the futures and indices। as I tell you, if the like अगर कंट्री में लोन ज्यादा बढ़ गया है, लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, बिकॉज लोगों के पास कैश नहीं है, ठीक है, लोगों के पास कैश नहीं है, ओके। नाउ how they gonna do any kind of more businesses, how they expand their businesses, how they gonna like they're gonna you know like they're gonna create more innovations? How? They can't, because they don't have more cash to flow to give in the market, okay. How? Because the bond market is go against the businesses, okay, like this businesses, and bond markets go against also the cash, okay, the DXY, the USDX, whatever.
ऑलराइट। अब यहाँ पर ठीक है, अब मैंने ये फंडामेंटल बात कर दी, अब हम थोड़ा टेक्निकल पे आते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एक 0.25 लेवल ऑफ द एफईजी पर टैप करके यहाँ पर सेल था। अब हम किस तरह एक्सपेक्ट करके मार्केट यहीं से मूव होगी कैसे, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीएक्सवाई की, ओ सॉरी, बॉन्ड मार्केट की। अब अगर there are three types of bond market I want to talk about: the 30 years bond market, the 10 years bond market, and the 5 years of bond market. Okay, so as you can see, this is a month of October. Okay, September, October, and then November. So this is the month of October. We have see that in weekly time frame there is a liquidity. Okay, मार्केट ने एसएमटी किया, मार्केट ने, चलो एसएमटी की बात नहीं करते, मार्केट ने एक लिक्विड ग्रैब की। ओके, इन द 30 इयर्स बॉन्ड मार्केट विच इज हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर 30 इयर्स बॉन्ड मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट, मार्केट ने कोई ऐसा कोई रिजेक्शन पे टैप कर दिया, देन इट्स अ हाई प्रोबेबल। क्यों? क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, it's a long term analysis for the long term investors. Okay, so अगर 30 इयर्स ऑफ बॉन्ड मार्केट में कोई मूवमेंट हो रही है, कोई एसएमटी दिख रहा है, या फिर कोई मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप, कोई ना कोई किसी भी रिवर्सल पॉइंट पे टैप कर रही है, देन इट्स अ हाई प्रोबेबल। ओके, बट इन द हाई टाइम फ्रेम। ओके, सो सी, यहां पर हमें एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, हमें यहाँ पर एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है ऑफ द कंट्री कि क्या सूरत हाल चल रही है कंट्री की, क्या जीडीपी, क्या सूरत हाल अभी एक इकोनॉमी की चल रही है ऑफ द कंट्री। ओके, सो अब यहाँ पर एक मार्केट ने लिक्विड ग्रैब की, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विड ग्रैब नहीं की ऑफ द 10 इयर्स ऑफ बॉन्ड मार्केट, यहाँ भी मार्केट ने टैप ग्रैब नहीं की। सो इट्स अ इंडिकेशन कि यहां से अब मार्केट मूव होगी। क्यों? क्योंकि हमें एक एसएमटी दिख चुका है बॉन्ड मार्केट के अंदर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हमें एक एसएमटी दिख चुका है बिजनेसेस के अंदर। ओके, एंड हमें एक इंडिकेशन मिल चुका है कि मार्केट एक रिवर्सल पॉइंट पे खड़ी हुई है। नाउ मार्केट हैव टू मूव। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट आल्सो द करेंसी मार्केट, ओके, so let me go into the currency markets and let me talk about that now। अब यहां पर क्या सिनेरियो है, यहां पर दिस इज द मार्च, ओके, एंड दिस इज द अक्टूबर। ओके, मैं अक्टूबर की ही बात कर रहा हूं। ओके, सो यहां पर हमें एक और ब्लॉक मिला, और और ब्लॉक पे हमें एक मार्केट ने क्या क्या किया, मार्केट ने मार्च की, अक्टूबर ने मार्च की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब की। क्यों? क्योंकि मार्च ने पहले ही किसी मंथ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी, बिकॉज इट्स अ HRLR, दैट्स व्हाई मार्केट डिडंट ग्रैब द लिक्विडिटी ऑफ मार्च। Now, if I talk about the Euro USD, okay, so this is the month of March and this is the month of October. अब यहाँ पर मार्च ने HRLR नहीं किया, एंड दैट्स द इंडिकेशन यहाँ पर एक लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, मार्केट ने किसी भी मंथ, यहाँ पर मार्केट ने एक लिक्विडिटी पेंडिंग की है। क्यों? मार्केट ने किसी की लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं की। ओके, यहाँ पर मार्केट ने बगैर किसी इंडिकेशन किए, बगैर किसी रिवर्सल पॉइंट पर टैप किए बगैर मार्केट ऊपर भाग गई। नाउ इट्स अ हाई इंडिकेशन कि मार्केट यहाँ पर इंजीनियर लिक्विडिटी करके गई है। नाउ सो यहाँ पर हमें एक एसएमटी देखने को मिला, मार्च ने, सॉरी अक्टूबर ने मार्च की लिक्विडिटी ग्रैब की। सो इट्स अ इंडिकेशन ऑफ द बाय साइड। नाउ मार्केट ने प्रीवियस सारे लिक्विडिटी, सारे मंथ की लिक्विडिटी ग्रैब की, जहां जहां मार्केट पॉसिबल कर सकती थी, मार्केट ने ग्रैब की, एंड देन बैम। नाउ टेल मी हाउ द फक हाउ द फक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क? टेल मी, is there any kind of indication, is there any kind of like like they will gonna give you the indication, they will leak their information, they will leak their business sheets, something like that. They will reveal their sheets for only for you that is living in a village, that have that only
have $100 to $1,000, who is driving the trillions of market, then tell me how they're gonna give you their information to invest in their business. How, like, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे $100 और like 100,000 जितने 100 उससे तो फर्क पड़ेगा, but $1K, $2K, they don't give a shit about that, man. They don't give a shit. They don't give a fuck. Okay? उनको फर्क नहीं पड़ता तुम कितने मार्केट में डॉलर लगा रहे हो. तो how they gonna reveal their spreadsheets? How they gonna reveal their business sheets? They don't. They don't, man. They're not going to do that because, as I tell you, in this era, in this generation, no one want to give you money free. Instead, they want to grab money from you. Okay? The fundamental and the in depth of the fundamental analysis is just a bullshit. It's just a trap. It's just a manipulation. Okay? If you have buy their subscription and you're then it's other point of view. Okay? But in my point of view, if you bought that and if you are beginner for the purpose to be rich quick, then you are just a dumbass. Okay? So hope कि this video gonna help you very very precisely and very, like, hope you find something very important from this video. Hope you find something very VIP from this video. And so इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. और this is the innovation from by me. Okay, ये मैंने ही डिस्कवर किया इस चीज़ को, बट ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, बट इलेबोरेट थोड़ा मैंने इस चीज़ को अपने अंदाज में किया. ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो बताया है ये बॉन्ड्स मार्केट का, पहले तो मुझे पता ही नहीं था बॉन्ड मार्केट का. ये सारा ये आईसीटी की बदौलत हुआ, सारा आईसीटी ने ही हमें बताया. So that's the credit by the of ICT. Okay, sorry, that's all the credit goes to ICT, the inner circle trader, the Michael J. Huddleston. But कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं उसकी, but we don't have to blindly trust to someone. Okay, बस वो कुएं में कूदने कहते तो कुएं में कूद नहीं जाना, पहले सोचना है कि क्या कह रहा है वो. ठीक है, जैसे कि आईसीटी ने बात की कि बिटकॉइन 100K पे जाएगा. ठीक है, तो सॉरी बिटकॉइन $0 हो जाएगा, बट नाउ बिटकॉइन इज स्टैंडिंग ऑन 100K मैन. सो नाउ जो चीज़ें हमें लगती हैं कि दिस इज लॉजिकल, गो जस्ट बैक टेस्ट इट एंड just go in depth in that. Okay, but if you don't find something logical in that, just leave it. Okay, find your point of view, find your in trading you have to have a very critical mindset. Okay, a very creative mindset, a very creative imagination. You have to have very creative imagination. Okay, so in my point of view, this is very crucial to have a critical thinking, a critical mindset, a creative imagination. Okay, so hope you find something insightful. Be safe and good trading.